Alright guys, welcome back to my channel. So अभी quickly I wanted to basically record this session because Bank Nifty ये एक important support की तरफ आ रहा है. You know, I'm going to definitely take a trade if it comes to 38,400, right? With a smaller quantity, obviously, because markets are not doing pretty well. When Dow Jones futures, this is going down. So, I mean, with a stop loss of 180, I can buy at 38,400 with a very small quantity. Maybe I'll take 50, just 2 lot of Bank Nifty. But I'll look for at least 1:2 kind of reward. And why I'm very keen about this, क्योंकि HDFC Bank में भी, if you'll see, HDFC Bank is also coming down to its major support. ICICI is also coming down to its major support. Axis Bank is already in the major support, but it is kind of breaching it. There is nothing on quote. So HDFC, ICICI and Axis, all of these are coming in the right area. So, अगर ये तीनों एक साथ बेसिकली इसको हिट करते हैं सपोर्ट जोन को, so I mean, as per me, this is one of the best scenarios. जो मैं आपको बोलता हूँ ना हर बार कि there is always the next best trade. So I believe this is the one of the best trades it can become. So yeah, I mean, I'd like to take that trade. और I think ये 1 hour के टाइम फ्रेम पे नहीं है शायद. This is on 1 day टाइम फ्रेम. हाँ, एक्चुअली 1 day, बट मैंने स्टॉप लॉस 1 hour पे लिया हुआ है बिकॉज 1 day पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा था. तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है क्योंकि 200 पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए फॉर ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स लाइक अस, वी शुड अवॉइड टेकिंग ह्यूज क्वांटिटीज अगर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है. तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है का मतलब आपको 50 क्वांटिटी, मेरे हिसाब से, मतलब मैं सजेस्ट कर अपने मैं तो 50 क्वांटिटी ही लेने वाला. और 50 क्वांटिटी पे 200 का अगर मुझे लॉस भी होता है तो इट्स हार्डली गोइंग टू बी 8 to 10,000 in options, not more than 8,000 I think. But in terms of revenue, targets, I'll at least have 15 to 20k as a target in options currently I'm talking, and it can be a swing trade too. It can be a swing trade too, but swing trade में problem ये है कि next day if market opens it can drastically change. So what I will probably do, अगर मैं 50 quantity calls की ले रहा हूँ and today if it is not giving me my target, तो शाम को अगर मेरे पास वो पोजीशन है, if I'm taking it to tomorrow, BTST ट्रेड बन रहा है, थोड़ा स्विंग ट्रेड बन रहा है, तो मैं एक क्वांटिटी ऑफ पुट भी लेकर के जाऊंगा. बाय, आई एम करेंटली टॉकिंग अबाउट बाय, बिकॉज अगर बहुत बड़ा मूवमेंट सडनली 1,500 पॉइंट का हुआ तो द लॉस, द प्रॉफिट एट पुट साइड विल काइंड ऑफ एडजस्ट द लॉसेस एट कॉल साइड. और अगर कॉल साइड में प्रॉफिट हुआ, ऊपर वो खुला, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पुट साइड का मेरा क्वांटिटी सिर्फ 1 लॉट है, कॉल साइड का क्वांटिटी डबल लॉट, बट 2 लॉट्स. तो आई मीन एज पर माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो. ये मैंने खुद से ड्रॉ किए हैं दीज सेटअप्स, एंड मेरे अकॉर्डिंग दीज आर गोइंग टू बी बेस्ट ट्रेड्स फॉर मी. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक दिस एंड आई जस्ट वांट यू गाइस टू जस्ट अंडरस्टैंड, एक बार इसको ट्रैक करो हाउ बैंक निफ्टी एंड HDFC एंड ICICI, दीज बैंक्स आर बेसिकली परफॉर्मिंग जब वो इस जोन में एंटर कर रहे हैं. क्या
And one important thing, guys, I'll be keep on basically providing these kind of videos whenever wherever possible. थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट आई विल नीड इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग दिस चैनल, स्प्रेडिंग द वर्ड. सो प्लीज डू सब्सक्राइब करेंगे, so it will kind of contribute in terms of expanding this. And अगर आपको मेरा suggestions videos पसंद आ रहे हैं, if you're learning something, do hit a like button also, because that's how YouTube algorithm works. So if a video has something basically in terms of clicks, subscriptions, and then likes and comments, then only basically it pushes to the new audience. So I mean, request everybody who is watching just to subscribe, like and share. So that's it, guys. Thank you for your time. Bye.